Students, today we will start human physiology. In this unit, first of all, we will discuss chapter nutrition, animal nutrition. In this chapter, बच्चों, we will discuss all about our alimentary canal, digestive system of human beings, digestive glands, mechanisms of digestion of food, carbohydrate, protein, starch and absorption of food. ये सारा सब कुछ बेटे कवर करेंगे in this chapter. क्या काम ने ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट करें बच्चों, बीएससी स्टूडेंट्स, नीट स्टूडेंट्स, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्टूडेंट्स नोट करें बच्चों. वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. टुडे वी विल डिस्कस न्यूट्रिशन. ये प्यारे बच्चों जितने भी हमने नोट्स बनाए हैं उनकी पीडीएफ फाइल, वीडियो लेक्चर उसके डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दिए. सभी बच्चे बेटा अपने नोट्स डाउनलोड कर लें. तो स्टार्ट करते बच्चों चैप्टर एनिमल न्यूट्रिशन. सबसे पहले डिस्कस करेंगे बच्चों टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन. इट हैज टू टाइप्स. वन इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. फर्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मींस सेल्फ नरिशमेंट. सेल्फ नरिशमेंट प्यारे बच्चों, in this mode of nutrition the organisms means the autotrophs are capable to produce, to synthesize, to manufacture their organic food from inorganic substances. हमने कहा the organisms means the autotrophs are capable to manufacture their organic food from inorganic substances. This autotrophic mode of nutrition, it has two types. Photoautotrophs, photosynthetic nutrition. All green plants, certain protistans. प्यारे बच्चों किंगडम प्रोटिस्टा में हम डिस्कस करेंगे. मैं सारा सबको डिस्कस करूंगा बेटा लेटर ऑन. Certain protistans like Euglena, like diatoms, dinoflagellates, volvax and बच्चों नोट करें नीट स्टूडेंट all BGA, blue green algae, cyanobacteria and बच्चों certain bacteria having बच्चों chlorophyll, bacteriochlorophyll. These बच्चों photosynthetic bacteria like chlorobium can directly utilize the radiant energy of sunlight. As these organisms, these autotrophs having chlorophyll and in presence of inorganic substances like CO2 and water capable, these organisms are capable to synthesize their organic food. Chemosynthetic, chemoautotroph nutrition. हमने कहा बच्चों chemosynthetic, chemoautotrophic mode of nutrition. Chemo means these chemotrophs, these autotrophs, they utilize inorganic substances and from these inorganic substances they are capable to synthesize their organic food. हमने कहा बच्चों chemosynthetic mode of nutrition. Certain non-green bacteria, वहां बच्चों हमने कहा chlorophyll bacteria having bacteriochlorophyll, photosynthetic bacteria. अब डिस्कस करें बच्चों certain non-green bacteria like iron bacteria, like बच्चों sulfur bacteria, nitrifying bacteria like nitrosomonas. नीट स्टूडेंट्स एक एक बच्चों एग्जाम्पल पे बेटे फोकस करें. हमने कहा नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया लाइक नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रेट बैक्टीरिया लाइक नाइट्रोबैक्टर. These organisms, these chemotrophs can manufacture their organic food by utilizing inorganic substances like iron, like sulfur, like ammonia, like nitrate. These organisms synthesize their organic food. नेक्स्ट पॉइंट इज हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन. पहले हमने बताया बच्चों ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉफिक के टू टाइप्स. फोटोऑटोट्रॉफ्स मींस द ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल टू यूटिलाइज द रेडिएंट एनर्जी ऑफ सनलाइट टू प्रोड्यूस देयर ऑर्गेनिक फूड बाय यूजिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. Chemosynthetic, chemoautotrophs means the chemotrophs are utilizing
inorganic substances, and by utilizing inorganic substances they manufacture their organic food. And in this mode of nutrition, that is heterotrophic mode of nutrition, means different mode of nutrition. The organisms, means heterotrophs, are unable to synthesize their own food. It means these are directly or indirectly dependent on autotrophs, phototrophs, plants or their products. Heterotrophic mode of nutrition. क्या देख रहे हैं बच्चों? It is a case of all animals, fungi, some protistans. हमने कहा some photosynthetic protistans are photoautotrophs, and some protistans like amoeba, like paramecium, many bacteria. वो बच्चों हमने डिस्कस किया फोटो सिंथेटिक बैक्टीरिया. ये डिस्कस करें बच्चों हम मैनी बैक्टीरिया, नॉन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया लाइक सुडोमोनास, सम नॉन ग्रीन प्लांट्स, सम नॉन ग्रीन प्लांट्स का बच्चों हमने लाइक कैस्क्यूटा, अमरबेल, आकाशबेल. दीज आर पैरासिटिक प्लांट्स, दीज आर हेटेरोट्रॉफ्स. हम डिस्कस करें बच्चों हेटेरोट्रॉफ्स means these heterotrophs utilize directly or indirectly the organic food. They obtain their food energy, organic substances, food substances from others. These are dependent on others, autotrophs. These heterotrophs, these are further classified into 4 groups: holozoic mode of nutrition, saprozoic mode of nutrition, parasitic mode of nutrition and symbiotic mode of nutrition. अब डिस्कस करें बच्चों हेटेरोटाइप्स. हेटेरोटाइप्स की भी फर्स्ट टाइप ले रहे बच्चों होलोजोइक. यहां देख रहे थे बच्चों फोटो ऑटोट्रॉफ्स मींस होलोफिटिक कंप्लीट प्लांट्स लाइक. और अब डिस्कस करें बच्चों हम होलोजोइक. दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कंप्लीट एनिमल लाइक, मींस दे कंज्यूम solid organic food substances, and these in this holozoic mode of nutrition we classify the organisms as herbivores. These organisms consume plants, algae or plant products. Herbivores, example बच्चों cow, rabbit. Carnivores, these organisms consume animals like lion, tiger. Omnivores, these organisms consume both plants and animals, are omnivores. Man is also omnivores. Next type is cannibal. Need students, very important point is cannibal. The cannibalism, हमने कहा बच्चों cannibal, CANNIBAL. In this mode of nutrition, one organism consumes the members of its own species. हमने कहा बच्चों cannibals, very important point for NEET students. One organism consumes, it feeds upon the members of its own species. That is cannibal, and this phenomenon is cannibalism. It is a characteristics of snakes, बच्चों king cobra, बच्चों scorpion, cockroach, detritivores. Such organisms feed upon dead decaying organic matter. हमने कहा बच्चों dead decaying organic matter like earthworm, detrivores. Next point is insectivores. Note करें बच्चों another point for NEET students, AIM students. Insectivores means one organism consumes insects को. बच्चों note down. Next point is Myrmecophagus. These are also insectivores. This term is very important for NEET students. Cannibalism. Another point is Myrmecophagus. These are ant eaters. Myrmecophagus, it means these are insectivores, particularly बच्चों they feed upon ants. These are ant eater. Myrmecophagus. Common example ले रहे बच्चों इनके ant eaters के like Manis,
it is scaly anteater. And बच्चों very important example, NEET students, it is echidna, it is spiny anteater. क्या काम ने बच्चों? All these anteaters are collectively named एडेंटुलस। इसका मतलब नीट स्टूडेंट्स, एम स्टूडेंट्स, तीनों पॉइंट नोट करें बच्चों, दीज आर इंसेक्टिवोरस। क्या काम है बच्चों? दीज आर इंसेक्टिवोरस एज वेल एज दीज आर मायरमिकोफेगस एंड द थर्ड ऑप्शन आल्सो करेक्ट, दीज आर एडेंटुलस। इट मीन्स द आंसर इज फोर्थ, ऑल अबोव, डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट इज sanguivorous. Another important point for NEET students, sanguivorous और sanguinivorous। हमने कहा स्पेलिंग्स भी नोट करें बेटे, SANGVIVORES और sanguinivorous, it means SANGVINIVORES, sanguivorous, sanguinivorous means they consume, they feed upon blood. These are blood sucking animals like leech, like बच्चों female anopheles mosquito, that is sanguivorous, sanguinivorous. Another example is very important, that is cyclostome, हमने डिस्कस किया था बच्चों, cyclostome। नेक्स्ट piscivorous, very important point, feed upon the fishes। and ये देख रहे हैं बच्चों granivores, means the animal consume on seeds, grass, like बच्चों house sparrow, pigeon are granivores। piscivorous कौन बच्चों? crocodile। and very important point for NEET students, coprophagy, coprophagus, coprophagy means an organism consumes किसको बच्चों? देयर फीकल मैटर को, फीकल मैटर को, लाइक रैबिट, नोट करें बच्चों, लाइक रैबिट, गिनी पिग, रैट, दे कंज्यूम, दे पास देयर फूड 2 टाइम्स। अपनी एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू बच्चों फूड को 2 टाइम्स पास करेंगे फॉर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ सेलुलोज, बिकॉज इन दीज एनिमल्स सेलुलोज रिमेन्स अनडाइजेस्टेड। For the complete digestion of cellulose, they consume their fecal matter. So they pass their food twice through the alimentary canal. It means, not correct NEET student, rabbit, guinea pig, rat are coprophagus because they consume their fecal matter. Next point very important, NEET students, बहुत कुछ बेटा, millivores, MILLI means such animals, such organisms consume on honey. These are honey eaters, millivores। and बच्चों saprophytic, saprophytic confuse now फिर NEET students, हमने यहाँ का बच्चों detrivores, earthworm that consume, that feeds upon dead decaying organic matter। and in case of saprophytic, saprozoic mode of nutrition, the organism क्या करेगा बच्चों? कंज्यूम्स डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, उसको डिजोल्व करेगा, उसको सॉल्युबलाइज करेगा बाय सीक्रेटिंग सम एंजाइम्स। एंड आफ्टर डिसोल्यूशन, solubilizing the food, the sap is absorbed through their general body surface. Fungus, that is saprozoic. Parasitic mode of nutrition. In this mode of nutrition, small organism, that is a parasite, consumes and it obtains its food from a large animal host. Parasitic mode of nutrition. Example बच्चों, tapeworm, the tinea, the liver fluke. Symbiotic mode of nutrition. Symbiotic हमने बच्चों पहले डिस्कस किया. Symbiotic, that is a mutualistic association in which two organisms live together and both are equally benefited. It means they derive their food energy from one another. As in case of lichens, algae provides organic food and the fungus provides
इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। सो प्यारे बच्चों, ये सारा सब कुछ हमने डिस्कस किया बच्चों, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट लेक्चर, कल के लेक्चर में बेटा एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्ट सिस्टम ऑफ मैन। थैंक यू।